Hello everyone, how are you all? I am Mo and you are welcome back to my channel, and I hope you all are doing good. Today I have 4 products from Byla that I purchased from their official website at rupees 999, and I'm going to share my complete, honest, unsponsored opinion about them. I will also tell you things that I liked about this brand and don't like about this brand, and I will also mention my most favorite and my least favorite products out of these 4. So without further ado, let's get into the video. अगर अच्छा लगेगा, helpful लगेगा तो like ज़रूर कीजिएगा and kindly subscribe my channel if you want to hear only honest reviews. फर्स्ट आई हैव देयर रास्पबेरी डिटॉक्सीफाइंग फेस वॉश, जिसको आप आराम से एक बेरी फेस वॉश बोल सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट्स एज देयर थर्ड एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट. इसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट भी है, देन लिकोरिश एक्सट्रैक्ट भी है. बट इन जनरल दिस इज अ बेसिक सिंपल हाइड्रेटिंग जेल बेस्ड नॉन स्ट्रिपिंग क्लेंजर that feels and looks very similar to the aloe vera face wash from Simple. They both have that gooey kind of texture, they feel also very similar, and they both take same amount of water to rinse it from your face. हाँ, ingredients इसमें अंतर है. Also Simple is fragrance free, this one is not fragrance free, and I also feel that Simple creates little more lather than this one, but finish wise they are perfectly similar. It doesn't contain any exfoliators or any potent actives, so perfect to be used as your morning cleanser and perfect to be used for almost any skin type. अभी सिंपल का जो फेस वॉश है ना, मैं उसको पसंद करती हूँ लेकिन उतना भी पसंद नहीं करती क्योंकि ना उसको धोने में बहुत टाइम लगता है. How much I like Simple, that much I prefer this one. Nothing more, nothing less. Next I have their Peachy Boost Serum, which is probably their most popular product because इसको किसी ने ना आनुआ के पीची सीरम के साथ कंपेयर किया है. मैंने आनुआ ट्राई नहीं किया है, आई विल रिव्यू इट ऑन इट्स ओन. मैंने इससे पहले इसके ऊपर कोलैबोरेशन वीडियो भी किया था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई परचेस्ड इट एंड आई विल बी completely honest with you. First of all, this is a hydrating multi-antioxidant serum containing niacinamide, alpha-arbutin, ferulic acid and hyaluronic acid. And this is the only fragrance-free product out of these 4. ये ना पहले fragrance-free नहीं था और इसके texture भी thick था and slightly sticky था. They reformulated it and made it completely fragrance-free and made it much lighter, suitable for Indian weather, suitable for most of the Indian skin type. It also reduces your pigmentation and gives your skin a brightening effect. But if you have some stubborn pigmentation and you want to reduce them fast, like quick result, 1 month, will it work for you? No. Also, if you have dry and dehydrated skin and you are looking for a packed full hydrating serum, will it be enough for you? No. If you are already in your 40s and you are looking for a well-aging or anti-aging serum, will it work for you? No. This is a hydrating serum perfect for extremely oily to combination skin, not further that. And this is obviously a brightening serum for maintenance that you can use every single day ताकि आपका skin dull ना हो जाए. And that could be a very nice option to pair with your potent anti-pigmentation serums. This serum will help those potent serum to go extra mile further. उनके जो efficacy है उसको improve करने में help करेगा. And yes, this could be a very good well-aging serum or basically serum for delaying signs of aging for teenagers till in your 20s to keep your skin protected from free radical damage, early signs of aging caused due to pollution, caused due to environmental factors. And people over 30s or 40s, this serum is for maintenance and not more than that. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इससे ना आपको कभी कंजेशंस, एक्ने, वाइट हेड्स नहीं आएगा until and unless you are sensitive towards any of the ingredients. And for that purpose, and a very affordable serum that you can carry, that you can use, that you can buy without even looking at your wallet, I actually like this one. Then I also purchased both of their face masks. They look similar, they smell similar, they feel similar. मतलब बिना बोले आपको दे दिया जाए ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा फेस मास्क आप यूज़ कर रहे हो. But they have very unique texture and I like the texture. It's like gel moisturizer that doesn't get absorbed completely. आप जब अप्लाई करोगे आपको तब लगेगा ही कि आप एक थिक जेल मॉइस्चराइज़र या फिर कॉस्मेटिक्स नेल क्रीम जो है ना वो यूज़ कर रहे हो जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. It leaves a thin layer on top of your skin. Over the time that becomes little sticky.
First, let's talk about their raspberry and AHA mask containing 0.5% glycolic acid and 0.5% lactic acid. इसमें कोई BHA नहीं है, so this is basically a depigmentation or de-tan face mask that you can use 3 times in a week आराम से. मेरा स्किन ना स्ट्रॉन्ग AHA टॉलरेट नहीं कर पाता है एंड आई यूज्ड इट ऑन ऑल्टरनेट डेज एंड डिड नॉट फेस एनी इरिटेशन. आई यूज्ड इट ऑन कंप्लीट ड्राई फेस. आई गिव इट लिटिल बिट ऑफ मसाज, थोड़ा सा ही लीजिए, ज़्यादा नहीं लगता. देन आई लीव इट फॉर 10 मिनट्स एंड देन आई रिंस इट ऑफ. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना एक गीला कपड़ा लीजिए और उससे उसको वाइप ऑफ कर लीजिए, देन यू रिंस इट ऑफ, बिकॉज द टेक्सचर इज ना वेरी gooey एंड स्लाइमी, ऑलमोस्ट लाइक कंडेंस्ड नेल म्यूसिन. एक चीज़ जो मुझे इसका अच्छा नहीं लगता एंड दैट इज़ आई प्रेफर माई एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स टू बी फ्रेग्रेंस फ्री, बिकॉज एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड फ्रेग्रेंस टुगेदर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी. और इससे भी ना मुझे स्किन पे थोड़ा इरिटेशन होता है, दिस एरियाज़ में मुझे थोड़े सेंसेशन होते हैं. लेकिन इसके कुछ कुछ चीज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये एक्सफोलिएट करता है इन अ मोस्ट जेंटल वे, इतना कि मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे ये कितना दिन यूज़ करना चाहिए. हफ्ते में 1, 2 और 3 टाइम्स आई विल डिसाइड एंड नॉट द प्रोडक्ट. और एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, येस इट एक्सफोलिएट्स बट इट डजंट लीव द जॉब ऑफ हाइड्रेटिंग माई स्किन. इट एक्सफोलिएट्स इन अ हाइड्रेटिंग वे, बट येस आई वुड प्रेफर इट लिटिल मोर, आई वुड recommend it little more if it comes with a fragrance free version. And last but not least, their blueberry repairing mask, which is my most favorite out of these 4. अभी मेरे स्किन पे ना एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट से ज़्यादा ये हाइड्रेटिंग, सूदिंग, रिपेयरिंग मास्क बेहतर काम करता है. Now this one is not particularly a repairing mask. I think this is a hydrating and soothing mask that you can use every single day and you can use it in so many ways. I personally prefer to use it not on dry skin, not on damp skin, rather little wet skin to seal the moisture. And then sometimes I use 2 layers of toners, maybe serums, maybe essences. On top of it, I'll put a thick layer. तो ये ना उस टाइम a mask की तरह काम करता है to trap all those things. Then I leave it for 15 to 20 minutes and before I completely rinse it off, I sprinkle little bit of water and give my skin some massage. तो ये massage cream की तरह भी काम करता है. And I also feel you can actually use it as a night sleeping mask at the last stage of your skincare routine. A sticky sleeping mask जो कि ऑलमोस्ट उसी नाइट रैपिंग मास्क की तरह ही काम करता है टू ट्रैप ऑल द गुड थिंग्स दैट यू पुट ऑन बिफोर दैट. So not just because of the texture, finish, effect, I love it also because how multitasking it is. अभी मैं थोड़ा जल्दी बोल लेती हूँ कि क्या वो इम्प्रूव कर सकते हैं एंड व्हाट आई लाइक अबाउट देम. ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को फ्रेग्रेंस फ्री वर्जन बना सकते हैं आराम से. इफ़ दे मेक इट फ्रेग्रेंस फ्री, it would be good for people with sensitive skin because the fragrance here is not typically mild. किसी को वो strong लग सकता है, किसी को वो okay लग सकता है. Now I don't think these products are made for targeting any serious concern or giving you very quick fast result. I would call this brand for college student. You are getting 4 products under 1,000 rupees and you are getting a full routine except your sunscreen. The texture and the concentration of actives used in their products are perfect for that age category that they can use every single day without even thinking destroying their skin barrier. Rather, they actually help them to delay their signs of aging gradually. My favorite products from the entire brand, from my most favorite to my least favorite, is the blueberry mask, peachy serum, then their raspberry mask, and last but not least is their cleanser. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर नहीं अच्छा लगा वो भी ज़रूर बोलिएगा. इम्प्रूव करना है क्या नहीं मुझे. Subscribe my channel if you are enjoying my contents and see you soon in my next video. Till then,